dress up your attitude जो है, basically it's like Richard Bandler says something very interesting, and it's simply this. He says it's like होता है क्या है लोगों के साथ कि जब उन्हें कहीं जाना होता है, so for example they are going for an interview, for a meeting, for a presentation of some kind, they dress up themselves, okay, सही अच्छे से कपड़े निकाल के, टाई शाई लगा के, बाल छाल बना के, you know, like जेल शेल ला के, you know, तो बस सही तैयार होके जाते हैं, but with wrong attitude. And when you go with wrong attitude, अनफॉर्चुनेटली सारे जो ड्रेसिंग होती है वो सारा मेकअप शेकअप जो होता है, वो जब पसीने आते हैं ना, वो ड्रेसिंग के बावजूद के, तो वो खराब एटीट्यूड की वजह से वो सारा मेकअप धुल जाता है. So rather than just working on your external self, work on your internal attitude. So ये dress up your attitude जो है, this is a very powerful pattern, a very powerful technique. Again, it's one of those जो कि आपके confidence building के लिए आप use कर सकते हैं. Many years ago, मैंने किताब पढ़ी थी, उसमें it was not an NLP book by the way, मगर उसमें एक martial artist का इंटरव्यू था जिसने I think somewhere in 1970s वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती थी, और उसने जो चैंपियनशिप जीती थी वो उससे किसी ने पूछा कि लाइक हाउ यू प्रिपेयर्ड, एंड दैट चैंपियन सेड कि जी मैं जब उसमें चैंपियनशिप में आई न्यू जो मेरे ओपोनेंट्स हैं दे आर मोर स्किल्ड देन आई एम, मोर एक्सपीरियंस्ड देन आई एम, लेकिन आई प्रिपेयर्ड माई सेल्फ थ्रू अ विजुअलाइजेशन टेक्निक. एंड दैट टेक्निक उसने जो बताई थी, जो मुझे अब याद है, इट्स बीन ओवर 25 years when I read this, बट जो टेक्निक उसने बताई थी सर कि मैं जो हर रोज जो अपने आप का यूज्ड टू इमेजिन कि देयर इज दिस टाइगर एंड आई एम स्टेपिंग इनसाइड द टाइगर एंड आई एम लाइक फाइटिंग लाइक अ टाइगर. एंड सेड कि स्पेशली जब मेरी लास्ट फाइट थी व्हिच वाज विद an opponent much stronger, much more experienced, much more skilled, this was the one thing that helped. So मुझे नहीं पता if Richard Bandler if he came up with this technique by reading something like this or listening to something like this, but this technique in NLP, it comes from Richard Bandler, and I'm sharing this technique जो कि Richard Bandler की बताई हुई technique है. Okay, so dress up your attitude में simply what you do is this: you close your eyes and think of a person that you find tough to deal with. This could be a boss, and this could be a group of people, by the way. This could be an individual in your life, or this could be any person. Then imagine them at the bottom of a ravine on an unstable ground. Okay, so you imagine कि जैसे आप एक पहाड़ी के ऊपर खड़े हुए और नीचे वो शख्स या वो ग्रुप, वो लोग वहां पर मौजूद हैं. Okay, and then what you do is imagine कि आपके साथ में there is this huge, ferocious looking, strong tiger. Okay, और ये जो टाइगर है, ये जो चीता होता है, अगर आपने कभी गौर किया हो, आप अगर चिड़ियाघर भी जाते हैं तो चिड़ियाघर में भी जो चीता होता है, कभी आपने गौर किया अगर चीते की आप आंख में यूं करके लाइक इफ यू लुक स्ट्रेट इनटू अ टाइगर्स आईज, इट्स नॉट वेरी इजी. It has some kind of like energy, some kind of like charisma. There is some power in the eyes of the tiger. Okay, so if you just imagine it's like you are stepping into that into a tiger, stepping inside the tiger. Step inside the tiger, and then you see the person standing जो नीचे वहां पर खड़ा हुआ है, आप तो ऊपर हैं. So you step inside the tiger और आप उस चीते की नजर से you're looking down on that person. You're looking down on the person while you're seeing from the eyes of the tiger. और जब आप उसको देख रहे हैं तो वो शख्स जो नीचे है, वो ग्रुप उसके ऊपर एक थरथरी सी आ रही है, वो घबराहट सी उसको हो रही है. Okay, and you say to yourself in your head, you say I'll use much lighter version of what Richard Bandler says, but you're saying like you are mine.
okay, and you hear this voice in your head, okay, it's like शेर की सी वो चीते वाली आवाज, okay, and you look at that person and say, you are mine, tum mere ho, okay, and as you do that, okay, you find there are like hundreds and hundreds of people, okay, who are saying, oh yes, you can do it, and you feel yourself, getting stronger and stronger, stronger and stronger, and you repeat this in your mind several times and anchor this feeling, anchor this powerful feeling. Okay. Then you think of a future time when you want to have this, when you will be in front of those people, and then simply recall this experience of being in this powerful state and say, you are mine. Okay. And feel this feeling growing stronger and stronger and stronger in you. Okay. So let's do this. Let's do this. So, and this is what you do is exercise. Simply, you just imagine that tiger. Okay, step inside that tiger. Take those feelings, intensify them, multiply them, relive them. How was it, by the way? By the way, I did not record this because मैं just the music use कर रहा था. Maybe there is some. Itrat says I even attacked those people. Empowering. Great. Rabia says great. Nida says empowering. Okay, so it's like I did not record this, लेकिन आपके पास जो मेरी audios हैं, stacking your resources वाली, you can use that, and apply this. This is a very simple thing. This is nothing. कोई बहुत इसमें कोई मुश्किल वाली कोई चीज नहीं है. You can easily use this.